हेडिंग लगाओ ordered pairs. Ordered pairs are basically the coordinates which satisfy certain conditions. For example, मैंने आपको सिंपल कह दिया कि how many ordered pairs satisfy x plus 2y equals 10 and x and y are positive integers. ठीक है, अब यार पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं बोलेगा, थोड़ा सा क्वाड्रेंट का यूज करवाएगा, बोल देगा एंड द पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. समझ में बात? पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों से कैसे होंगे? गिवन दैट x and y belongs to integer. अब आप मेरे को बताओ कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कौन से हो गए दोनों नंबर? पॉजिटिव, राइट? Yes, sir, positive. राइट. तो अब जब पॉजिटिव हो गए हैं तो वो आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा, कहेगा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए. तो ऑर्डर्ड पेयर्स हमको बताने हैं, ऐसे कौन कौन से नंबर है. पेयर्स बनाओ फटाफट. एक्स को क्या कह रहा हूँ, देखो एक्स को रखने से अच्छा वाई को रखो, क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए. तो एक्स तो हमेशा आंसर आ जाएगा. अगर आप एक्स से स्टार्ट करोगे 1 आएगा, फिर आप सोचोगे वाई कितना आ रहा है, 2y 9 4.5, बेकार हो गया, तो टाइम खराब होगा. तो बेस्ट है क्या, वाई को रखो. वाई को 1 रखा तो एक्स कितना आ गया? 8. फिर यहाँ पे वाई को 2 रखा तो एक्स कितना आ गया? 6. फिर 3 रखा तो 4. और पैटर्न दिख गया क्या रहा है? 8 6 4. अगला क्या आएगा? 2 4 4 2. फिर उसके बाद 0 हो जाएगा. खत्म हो गया नंबर्स, इजंट इट? Yep. कितने ऑर्डर पेयर्स हो गए हमारे पास? 4 ऑर्डर पेयर्स. 4. 1 2 3 4. क्लियर? Yes, sir. तो अब इसमें Yes. इसमें देखें कि डिफिकल्ट कैसे बनाएगा. बढ़ाएं थोड़ा सा, लेवल बढ़ाएं. तो ये तो हो गया आपका बहुत सिंपल लेवल, अराउंड 550 to 600. बढ़ाएं, लेवल बढ़ाएं. Yes, sir. क्वेश्चन आएगा ऐसा कि we have a rectangle, right? A rectangle symmetrically placed on a coordinate axis. ये पॉइंट आपको बता देगा that this point is nothing but, let us say 4, 0. ये पॉइंट भी आपको बता देगा, कहेगा 0, 3. Question will ask, find the number of points which lie inside the rectangle. हमें वो पॉइंट ढूंढने हैं जो ट्रायंगल के अंदर लाई करते हैं, and they have integral coordinates. मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर हैं. करो ट्राई, बताओ कितने पॉइंट लाई करेंगे अंदर. All right, so we have some answers. 35, 48. Multiple answers. Be very careful. If you count them, with a little carefully, you'll get the right answer. The question is easy, but there are various areas where you can make mistakes. So guys, let's draw. What's gonna happen? I think so. We'll have the coordinates from here.
0,2 because I'm looking for inside, and then this guy will be from 3, right? The first coordinates what we are looking for is from 2 and 3. So let's draw a line, just the line which will have the first integral coordinates. How many integral coordinates will this line have? So passing through 2, it will have 2, 3, this 3, 2, then 2, 2, then 1, 2, 3 here, that means 3 here, symmetrical, right? And then the last one over here, 0, 2. So there are 7 points on one line, right? Correct, Shishir? Aisha? 7 points on the first line. And how many such Yes, sir. lines will I be able to make? Passing through 2, then passing through 1, 2 above, 2 below. Not 6, 2 above, 2 below, and 1 on the x-axis. So that's going to be 5 lines. So 5 lines, 7 points each. I get 35. Any one of you got 35? Yes. Okay, great then. Clear? So that's the best way, I guess, to count it up. Or the other way is that you count the points of one quadrant and then you add of the axis. But I like this method more. This saves time and there are less chances of making mistake over here. Clear? Yes, sir. So let's move ahead. Guys, लोग पता नहीं एरिया क्यों निकाल देते हैं. एरिया नहीं निकालना है यहाँ पे. ठीक है? Of course there will be an answer lying over there 48. बहुत सारे लोग टिक मारते हैं इसको. ठीक है.